पारिक से चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो एक्ट है इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स का विद सेकंड पर्सन और विद एनिमल टू ऑब्टेन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। इन कॉन्ट्रास्ट सेक्सुअल परवर्जन जो है वो एक्ट है जो इंटेंडेड है टू रिजल्ट इन द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। लॉ और जो कस्टम है सोसाइटी की वह नॉर्मली परमिट करती है कि हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स जो है बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर with the sex organs intended for reproduction. Accordingly, any intercourse by a man with any other woman who is not his wife would constitute an offense in law unless there is a valid consent. तो वो offense होगा जब तक कि उसमें valid consent नहीं है। अगर इस तरह का intercourse जो है वो carry out होता है with the use of the sex organ in the natural manner, the alleged act by convention is known as a natural sexual offense. लेकिन however when a man is deprived of the company of a woman for a long time और जो natural means है sexual gratification वो available नहीं है, to him sex starved या फिर उसकी mental condition जो है वो abnormal है, तो वो likely है to indulge in the sex practices against the order of nature. तो इसको हम कहेंगे unnatural sexual offenses. वुमेन जो है वो भी इंडल्ज कर सकती है इस तरह की प्रैक्टिसेस में सिमिलर सर्कमस्टांसिस में। सेक्सुअल ऑफेंसेस क्लासीफाई होते हैं नंबर 1 नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस जिसमें रेप, इंसेस्ट और एडल्ट्री आ जाते हैं। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में सोडोमी, बकल कोइटस, ट्रिबाडिज्म एंड बेस्टियलिटी। ये सब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रेप। सर्कमस्टांसिस जिनमें एक्ट ऑफ कोइटस जो है या अटेम्प्टेड कोइटस जो है वो रेंडर करता है मैन को लायबल टू चार्ज ऑफ रेप वेरी स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन बेसिक फीचर जो है वेरियस स्टेट लॉ का वो एसेंशियली सेम है। रेप जो है वो जनरली डिफाइन होता है अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट और विथ हर कंसेंट व्हेन इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, यानी कि फ्रॉड के ज़रिए या पुटिंग हर इन द फियर ऑफ डेथ या हर्ट के ज़रिए, ड्रगिंग, इम्पर्सनेशन। मोस्ट जुरिसडिक्शन में ये अनलॉफुल होता है पर्सन के लिए इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी फीमेल अंडर देयर केयर या कस्टडी। इस तरह का एक्ट जो है वो डिज़ाइन होता है एज कस्टडियल रेप। ये डिफाइन होता है एज अ रेप बाय अ पर्सन जैसे कोई पुलिस ऑफिसर, जेल वार्डन, हॉस्पिटल स्टाफ एक्सेट्रा हु अब्यूज देयर पोजीशन टू कमिट द ऑफेंस व्हेन द वुमन इज़ इन देयर कस्टडी केयर. As West has rightly pointed out, much more is known scientifically about in the detection and proof of a rape than is usually and customarily utilized in most cases. If one keeps in mind the horrendous means horrible impact that an actual attack of rape has on the victim, and similarly the tremendous harm that is inflicted upon a falsely accused individual, one cannot deny the importance of applying scientific principles in handling of a rape case. A trial of a rape cannot be based upon emotional reactions of any party. Law on rape in India. Under section 375 IPC, rape is defined as unlawful sexual intercourse by a man with his wife under the age of 15 years, with any other woman under the age of 18 years or above that age against her will, without her consent or with her consent when it has been obtained by unlawful means. Unlawful means का मतलब है कि putting her on any other person in whom she is interested in fear of death or hurt. इसके अलावा impersonation, that is कि when the man knows that he is got her husband and that her consent is given because she believes that he is on another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. And number 3, with her consent when at the time of giving such a consent by reason of unsoundness of mind या फिर intoxication or administration by him personally or through another of the any stupefying or unwholesome substance. She is unable to understand the nature and consequences of that to which she consents. Penetration of labia majora, mouth, urethra or anus is rape. Sexual intercourse by a man with his wife, even against her will, is not rape if she is above 15 years of age, and the medical procedure intervention also not rape. Section 376 IPC lays down the punishment for the offense of the rape, जो कि extend कर सकता है 7 years से लेके life imprisonment या even death or also fine. Sentencing judge has discretionary powers to impose a lesser sentence. एक्सप्लेनेशन देखिए, कस्टोडियल रेप जो है वो डिफाइन होता है रेप बाय अ पर्सन हु आर इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जैसे पुलिस ऑफिसर, जेल वार्डन, हॉस्पिटल स्टाफ
और या जो अब्यूज़ करे पोजीशन को टू कमिट द ऑफेंस व्हेन वुमेन इज़ अंडर देयर कस्टडी केयर। गैंग रेप क्या है? जब वुमेन इज़ रेप्ड बाय वन और मोर इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन acting in furtherance of their common intention, each deemed to have committed gang rape. To do it, IPC prohibits the disclosure of the identity of the victim of rape. लेकिन Section 327 CRPC, the inquiry into and the trial of the rape or an offence under Section 376 shall be conducted in the camera, and it is not lawful for any person to print or publish any matter in relation to such proceedings, except with the permission of court. Section lay down the prosecution for the rape under this section where sexual intercourse by a accused is proved, and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped, and she states in her evidence before the court that she did not consent. The court shall presume that she did not consent. This applies to cases of custodial rape and gang rape. नेक्स्ट है मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स डिस्कस करें विद वेरियस पॉइंट्स जो एम्फेसाइज होते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ रेप इंक्लूड अ नोट ऑन इनडिसेंट असॉल्ट एंड वैलिड कंसेंट। डेफिनेशन रेप की एम्फेसाइज करती है सर्टेन एस्पेक्ट्स जैसे अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन ऑफ अ वुमन अगेंस्ट हर विल एंड बाय फोर्स और बाय इम्पर्सनेशन। देयर मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन आर एज फॉलोअर। अनलॉफुल देखें तो ये इम्प्लाई करता है कि देयर इज such an act as lawful sexual intercourse of a woman by force or against her will. The only sexual intercourse deemed lawful provided in the exception is 375 section is the normal one between a legally married man and a woman. A husband therefore cannot be charged with rape against his wife provided she is of the age specified by the law of that particular country. India में जो 16 years above है. Even if he has intercourse with her by force or against her will, as she cannot retract the implied consent given at the time of marriage unless a separation order is in force. However, the husband has no right to enjoy his wife's body without regard to the question of safety to her, nor can he assist another man to commit rape on her. Next, sexual intercourse in law, this term is held to mean slightest degree of penetration of labia majora by penis with or without the admission of semen or rupture of hymen. It is therefore quite possible to commit legally the offence of rape without producing any injury to the genitals or leaving any seminal stains. Inability to produce penile erection does not preclude the ability to commit rape. In such instances, corroborative evidence will be required to prove the offence. If rape cannot be proved or there is any reasonable doubt as to the intent to rape, the accused may be convicted of lesser offence of indecent assault on a female committed with intent or knowledge to outrage her modesty. 354 IPC lay down करता है punishment इस तरह के offence में. However, what constitutes an outrage on a female modesty differs according to the country and race to which the woman belongs. To kiss or place the hands on the shoulder of a woman would outrage the modesty of a Hindu or a Mohammedan woman, but not that of a European. To examine a woman against her will and without her consent also constitutes such an offence, which a doctor must remember, lest he may be charged with it. In most such offences, the accused has tried to undress her, pressed her breast under the guise of examination, or inserted a finger in the vagina. By a man देखें तो in India the law does not presume any limit of age under which a boy is considered physically incapable of committing rape. In a charge of rape brought against a boy, the court decides the question of his potency from the evidence of the case is guided by section 80 to 83 in awarding punishment. Likewise, there is no upper limit, and even old people aged 80 and above are said to have committed rape of a woman. देखें तो this means that offence can only be committed against a woman, and a woman therefore cannot rape a man, although she may be guilty of the indecent assault upon him. Similarly, animals cannot be raped. There is no age limit below or above which rape cannot be committed against her will. This is the substance of the definition that raises a number of important points. Essence of offence is that it should take place against the wishes of woman, that is without her consent. Valid consent जो है is one which is free, voluntary and given when the woman is in full possession of her senses. If obtained by fraud या fear या force के जरिए तो it is not a free consent. India में women of above the age of 18 years can give such a consent. A girl of 14 years consulted a physician for suppressed menstruation. He had intercourse with her, stating that it was part of treatment. He was convicted of the offence of rape.
1923 में a singing teacher named Williams was charged with rape for persuading a young pupil that a sexual intercourse with him would improve the quality of her voice. Next is invalid consent in rape. The consent given by a female is invalid when number 1 she is under the age specified by law, number 2 she is intoxicated या mentally retarded या obtained by fraud, force या putting her in or any person in whom she is interested in fear of death or hurt. इसके अलावा it is obtained after the act. Law provide करता है same protection to a prostitute against sex assault as it does for the chaste woman. But when a charge of rape is made by a prostitute, the case may be more closely scrutinized. Something more than medical evidence would be required to establish such a charge. Medical proof of intercourse is not legal proof of rape. In short, rape is not a medical diagnosis but a legal definition and inference. Whether a man can have intercourse with a woman without her knowledge while in a state of natural sleep is largely a matter of common sense. It is impossible for complete sexual intercourse to take place on nubile virgin during her natural sleep without her knowledge, as the pain caused by the first act of coitus would certainly wake her up. However, partial penetration within terms of law can occur to constitute the crime. It is possible, though improbable, for sexual intercourse to take place in case of women used to it. Carey records an instance where a woman woke up to find her grandson having connection with her. Rape may be committed without the knowledge of a woman under the influence of narcotics या फिर anesthetics या फिर in the state of coma as after an epileptic attack and possibly while in an hypnotic trance. Usual means जो है of showing lack of consent include number 1 evidence of fraud, इसके अलावा ड्रिंक्स या ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी थ्रेट का एविडेंस, फोर्स का यूज़ और साइंस ऑफ स्ट्रगल, physical disproportion between the parties. Below are excellent example of the modus operandi to perpetrate fraud. Rape in Rome. Miss World Israel's Lenore Abragel was sexually assaulted when she was in Italy for a fashion show. According to her, the travel agent who was issuing the ticket offered to drive her to Rome instead. Shortly after starting out, he tied her up and assaulted her. He then apologized and drove back to Milan. The man has been arrested and charged with rape. Good, but why didn't she get off the car? There was danger of serious bodily injury or loss of life. By force, अब ये देखें तो under the Indian law, it is essential that a woman should resist the force to her utmost. It would not amount to rape if after half-hearted resistance she gave consent. Shouting, crying, biting, beating suggest force and resistance. Resistance offered depend upon the type of woman, her age, development, whether she is virgin or not, and on the class of society to which she belongs. While in most cases signs of resistance are to be expected, in some they may be slight or even absent. Inability to resist from terror या feeling of helplessness की वजह से at her situation lead करेगा woman को to succumb to the force of ravisher without offering that degree or even any degree of resistance, which is generally expected of a woman so situated. Impersonation जो है ये भी पॉसिबल है जब वोमेन जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स, इल्यूजन, हिप्नोटिक ट्रांस या फिर वो मेंटली डिफेक्टिव हो या फिर वो asleep हो या फिर rarely when she is awake but lying in the dark. If she intentionally or with her knowledge takes drugs or intoxicants, she cannot claim this as lack of consent. मतलब अगर वो खुद ले रही है ड्रिंक्स, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेंट तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकती कि देयर वाज लैक ऑफ कंसेंट. नेक्स्ट है इंट्रामैरिटल रेप. लीगली अज्यूम होता है कि कंसेंट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो इम्प्लिक्ट होता है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. ये देयरफॉर जो है अज्यूम हुआ है कि हस्बैंड कैन नॉट रेप हिज वाइफ. This principle has been slowly eroded over the years, and it is now accepted that the supposed marital exemption in rape is a thing of past and cannot form any part of modern law. It was at one time customary to require the victim of rape to offer utmost resistance to guard her chastity, no matter what degree of violence was used. Nowadays, it is asking too much to expect a woman to prefer being throttled or suffer seriously bodily harm so as to avoid unwanted sexual intercourse. Successful treatment of venereal diseases, easy availability of the therapeutic abortion, and widespread use of contraceptive pill demand rethinking on the tradition. Common law must take prevailing social attitude into account.
They do not recognize any privilege whereby the husband has an absolute right to enjoy his wife's body even against her will, and less so by the use of force. Marriage in modern terms is regarded as a partnership of equal and no longer one in which the wife is subordinate to the husband. Enlightened jurists regarded rape as an aggravated form of assault and hold that it is a criminal offense to assault a woman, irrespective of the position, as to sexual intercourse and marriage. This line of reasoning is to found in South Australian legislation, wherein Criminal Law Consolidation Act state that a husband can be convicted of rape upon his spouse only if inter alia the offense consists of or is associated with an assault occasioning actual bodily harm or an act of gross indecency or threat to those ends. Bobbitism 1993 to 1994 in Virginia, USA, in the case of Bobbitt versus Bobbitt. Mrs. Bobbitt accused her husband of rape, but the jury did not return to verdict of guilty against Mr. Bobbitt, mainly because number one, they were not legally separated. Number two, Mr. Bobbitt did not scream or shout at the material time, or number three, show any sign such as bruise on her body as evidence of act against her will. Also refer to Bobbitt's case in the chapter of insanity under the irresistible impulse. Examination of the rape victim. Describe in detail the procedure of the examination of a victim of rape and include a note on Locard principle of exchange. इसके अलावा describe the possible finding in a virgin, a woman used to sexual intercourse, and a child alleged to have been raped. Forensically trained sexual assault nurse examiner Sane and the sexual assault response team SART coordinate करते हैं activities में in relation to the sexual assault victim to provide various services with medical, legal, social, etc. USA में इंट्रोडक्शन टू द फॉरेंसिक नर्सिंग जो है इन चैप्टर 2 जो है न्यू पर्सपेक्टिव है हेल्थ केयर का. इन्फॉर्म कंसेंट जो है विक्टिम का वो भी ऑब्टेन करना है इन द राइटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस इफ़ शी इज़ ऑफ एंड ओवर द एज ऑफ कंसेंट 12 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया. लेकिन अगर वो अंडर द एज है इस कंसेंट की या मेंटली सब नॉर्मल पर्सन है तो रिटन कंसेंट जो है पेरेंट या गार्डियन का वो लिया जाएगा. एग्जामिनेशन जो है वो बनाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पर्सन, अदर फीमेल नर्स या फीमेल रिलेशन होगा किसी, अनलेस द डॉक्टर हैपन्स टू बी अ फीमेल डॉक्टर. सेक्शन 53 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ले डाउन करता है व्हेनेवर अ फीमेल इज़ टू बी एग्जामिन्ड, एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ बनाई जाएगी ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. इंडिया में विक्टिम ऑफ रेप जो है वो जनरली एग्जामिन होगा बाय अ लेडी डॉक्टर. सिर्फ अगर लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो मेल डॉक्टर जो एग्जामिन कर सकता है प्रेजेंस ऑफ फीमेल नर्स की मौजूदगी में या अटेंडेंट की मौजूदगी में. अगर विक्टिम रिफ्यूज़ करता है फॉर द एग्जामिनेशन शी कैन नॉट बी फोर्स टू सबमिट फॉर द एग्जामिनेशन. फुल एग्जामिनेशन जो है उसमें उसके प्रिंसिपल फीचर्स है. नंबर वन, प्रिलिमिनरी डेटा होता है, स्टेटमेंट होती है विक्टिम की और अदर सेपरेटली, साइंस ऑफ स्ट्रगल क्लोथ पे और बॉडी पे, एग्जामिनेशन जेनेटल्स की, यूरेथ्रा, माउथ, एनस की फॉर द लोकल साइन ऑफ वायलेशन, इंजरीज भी दिखेंगे वहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा एनी एविडेंस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, कलेक्शन लेबॉर्ट्री स्पेसिमेन की और इन्फेरेंस और इसके बाद एडवाइस ऑन फॉलोअप. सबसे पहले प्रिलिमिनरी डेटा देखें तो इसमें आ जाता है फुल एड्रेस, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, डेट, टाइम ऑफ अराइवल, कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बाय whom examination is requested, and the name of the female nurse to present थी at the time of examination. स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट जो है ना विक्टिम की इन हर ओन वर्ड्स जो वो लिखेंगे एज मच एज पॉसिबल वर्ड फॉर वर्ड. अमाउंट ऑफ वायलेंस जो यूज़ हुई, पोजीशन असाइलेंट की और मोड ऑफ अटैक जो है वो भी डिसाइड करेंगे. ये ज़रूरी है कि हम इंक्वायर करें अगर वेजाइनल, ओरल या रेक्टल कॉन्टैक्ट हुआ. उसकी जो स्टेटमेंट है वो नोट करेंगे विद रेफरेंस टू पेन, हेमरेज, सेंसेशन एज टू पेनिट्रेशन एंड एमिशन एंड अपीयरेंस ऑफ एनी डिस्चार्ज. It should also be ascertained if she cried for help or was too terrified to do so, or she fainted. इंक्वायरी जो है वो हम करेंगे ऑन द इवेंट आफ्टर एलिग्ड असॉल्ट. जैसे कि एग्जांपल मतलब कि इफ़ शी हैज़ चेंज्ड हर क्लोथिंग, बाथ्ड और पास्ड यूरिन. एनी डिले इन मेकिंग द कंप्लेंट टू द अथॉरिटी शुड हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उसकी वजह. रिकॉर्ड जो है वो बनाएंगे इन स्टेटमेंट ऑफ अदर्स हु अकम्पनी हर. डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द वेरियस स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. साइंस ऑफ स्ट्रगल देखें तो ये जो है देखे जाएंगे फॉर उसके कपड़ों पे और उसकी बॉडी पे. क्लोथिंग पे अगर वो होंगे तो वो इसी तरह होंगे जैसे उसने पहने थे एट द टाइम ऑफ द क्राइम.
शुड बी एग्जामिन्ड गुड लाइट में। एविडेंस ऑफ स्ट्रगल देखेंगे, जैसे टीयर्स फैब्रिक में, मार्क्स ऑफ मर्ड या ग्रास, स्टेन ब्लड के, सीमन के। जब क्लोथ्स टोन होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग इंजरी जो है बॉडी पे वो भी प्रेजेंट होंगी, वो भी देखेंगे। मड और ब्लड स्टेन भी प्रेजेंट होंगे, जनरली सीन ऑन द बैक ऑफ द क्लोथ व्हेन द सेमिनल स्टेन्स आर सीन ऑन द फ्रंट ऑफ द क्लोथ। स्टेन्स जो है वो मटेरियल पे भी मिलेंगे, हैंड कर्चीफ पे, यूज फॉर क्लीनिंग आफ्टर द सॉल्ट। When blood stains are seen, it must be ascertained if they are due to menstruation. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में menstrual blood flow जो है ना वो फाउंड होता है टू कंटेन endometrial cell from the uterus, epithelial cells from the vagina and large number of the microorganism जो कि फाउंड नहीं होते ऑर्डिनरी ब्लड में। तो इन एंडोमेट्रियल सेल्स और इनको हम देखेंगे एपिथेलियल। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस या मोनीलिया जो है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। ब्लड जो है वो लेंगे फॉर ग्रुपिंग एंड डीएनए कैरेक्टरिस्टिक टू बी डिटरमाइंड if the stain belong to the victim or assailant. Seminal stain जो है वो भी ग्रुप होंगे to ascertain subsequently if they match with the assailant blood group. क्लोथिंग जो है उसको रिटेन करेंगे, केयरफुली ड्राई करेंगे, लेबल और फॉरवर्ड कर देंगे फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सस्पिशियस स्टेन आइदर ब्लड, सीमन और बोथ। अगर किसी फिजिकल एविडेंस कोई और हमें मिलता है जैसे कि फॉरेन हेयर्स, पीसेस कपड़ों के, तो वो भी हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम द विक्टिम। ट्राउज़र बटन आइडेंटिकल जो असाइलेंट का हो, वन हु हैज़ वन मिसिंग, इट हैज़ बीन वैल्यूएबल कॉर्पोरेशन, और वो भी हम लिखेंगे और नोट करेंगे, उसके लिए मतलब देखेंगे। तो दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र होता है मटेरियल का फ्रॉम वन अनदर, तो इस तरह का ट्रांसफ़र जो है वो विजिबल हो भी सकता है टू द नेकेड आई या नहीं भी हो सकता। इसको कहते हैं लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। Women usually scratches are silent during the struggle, and this may result in the injury to her nails, which should be recorded. डेब्रिस जो होगी उसके नाखूनों के अंदर वो हम रिमूव करेंगे और एग्जामिन करेंगे प्रेजेंस ऑफ टैग ऑफ एपिथेलियम के लिए, ब्लड के लिए या फाइबर्स के लिए, साइलेंट के जो होंगे। सारी जो बॉडी है उसको फिर एग्जामिन करेंगे मार्क्स ऑफ वायलेंस के लिए। An attempt at undressing the victim should not be made, but she should be requested to do so herself. अपेरेंट डेवलपमेंट विक्टिम की जो है वो इंपॉर्टेंट होती है टू नोट इन कनेक्शन विद द एबिलिटी टू ऑफर रेजिस्टेंस। हावेवर अगर थ्रोट जो है वो ग्रिप किया हुआ या हेड जो है उसने रिसीव किया हो ब्लो, तो विक्टिम की कैपेसिटी फॉर एनी रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटली इम्पेयर हो चुकी हुई होगी। इस तरह हम ये भी देखेंगे कि उसकी ऐसी कंडीशन थी कि वो रेजिस्ट कर पा रही थी। इंजरीज जो फाउंड होंगी बॉडी पे वो डिस्क्राइब हुई है स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन या कॉर्पोरेशन ऑफ हर टेल। इंजरीज फाउंड हो सकती हैं अबाउट द चीक्स, लिप्स एंड नेक टू स्टिफल द विक्टिम्स क्राइज फॉर हेल्प, मतलब उसको उसकी क्राई वगैरह को चुप कराने के लिए चीक, लिप और नेक पे होगा इस इंजरीज। उसके अलावा अबाउट द रिस्ट एंड आर्म्स टू रेस्ट्रेन हर, एंड इसके अलावा बैक पे फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेवल या हार्ड ग्राउंड वाइल पिनिंग हर, एंड अबाउट द इनर साइड ऑफ द थाइस पे एंड नीज पे while separating her legs, and on the breast from rough handling. Breast may also show whitened nipples. The injuries may be scratches, bruises, nail marks, bites in the form of abrasion, contusion, laceration. They should be described in full, like any other injuries, with the data to assess their age, to see if they tally with the time of alleged incident. Biting of any description involve transfer of saliva from which the blood group substances can be identified in the secretors. Outline body diagram showing location, relative size, nature injuries की highly desirable है. There may be teeth bite marks imprint when the whole mouth was used to press the breast. Love bite. As a matter of practice, a second examination may be carried out 48 hours later. ये सेकेंड एग्जामिनेशन करनी होती है जब डीप ब्रूजेज जो है वो ईजियर होते हैं टू सी, या फिर जब विक्टिम जो है वो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है आफ्टर सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन जेनेटल्स की, यूरेथ्रा, माउथ और एनस की। तो ये भी होगी गुड लाइट में और जब पॉसिबल लिथोटोमी पोजीशन में, जब सारे पार्ट्स एक्सपोज हों। सूनर एग्जामिनेशन इज मेड बेटर एंड मेंस्ट्रुएशन शुड नॉट बी कॉज फॉर डिले। मेंस्ट्रुएशन इज नॉट अ बार टू इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स। लोकल साइंस ऑफ वायलेशन देखें, प्रेजेंस या एब्सेंस ब्लड स्टेन्स की अबाउट द लेग्स और वजाइना, यूरेथ्रा, माउथ, एनस शुड बी ऑब्जर्व्ड, एंड इफ प्रेजेंट इट शुड बी ascertained whether such a stain could be due to the menstruation or blood from victim or assailant. अगर वो ड्राई है तो उसको स्क्रैप करेंगे और क्लीन ब्लड स्काल्पल के साथ और प्रिजर्व कर देंगे एग्जामिनेशन के लिए। प्यूबिक हेयर जो है वो एग्जामिन करेंगे फॉर मेटिंग फ्रॉम सेमिनल फ्लूइड या ब्लड एंड फॉर फॉरेन हेयर्स। अगर हेयर्स मेटेड हैं टुगेदर उसका पोर्शन कट ऑफ करेंगे और रखेंगे फॉर एग्जामिनेशन। प्यूबिक हेयर शुड ऑल्सो बी कॉम्ड आउट
to collect non-matching male pubic hair and comparison sample of plucked hair preserved for the laboratory examination. कुछ believe करते हैं कि hair need not to be plucked and that the cutting would be alright provided all the other foreign hairs have been removed by combing etc. मतलब only combing से भी वो extra remove हो सकते हैं. जेनेटल इंजरी देखें तो वल्वा, हाइमेन, विजाइना और पेरिनियम जो है वो एग्जामिन करेंगे किसी इंजरी के लिए. टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द हाइमेनल रप्चरिंग एंड वेदर दिस इज रीसेंट और ओल्ड, अ ग्लास रॉड विद अ स्मॉल स्फेरिकल हेड जिसको ग्लेस्टरकेनी रॉड कहा जाता है, वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर इफ पॉसिबल, ट्रांस इल्यूमिनेटेड, वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे टू द विजाइना और पार्शली विथड्रॉ करेंगे टू डिस्प्ले द एज ऑफ हाइमेन. साइन रीसेंट रप्चर के होते हैं रैग्ड टीयर्स इन द हाइमन विथ लैक ऑफ एपिथेलियल हीलिंग, लेकिन इडीमा और हेमरेज होगी. वुमेन हु पे नो अटेंशन टू द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनिटल रीजन ऑफन हैव सुपरफिशियल एरिया ऑफ एरिथमा, इरिटेशन एंड ओकेजनली एब्रेजन्स उनको होती हैं और इसीलिए एनी सुपरफिशियल इंजरी फाउंड इन दिस एरिया मस्ट बी केयरफुली असेस्ड इन द लाइट ऑफ पर्सनल हाइजीन ऑफ द वुमेन. रेडनेस होती है ड्यू टू द लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन या फिर इरिटेशन बाय अ क्रॉनिक डिस्चार्ज मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ रिसेंट इंजरी. उसमें डिफरेंस करना होगा. ये भी नोट करना है एट दिस स्टेज के इफ़ द गेट इज़ नॉर्मल. जब जेनिटल इंजरी प्रेजेंट होती है तो गेट जो है ना ब्रॉड बेस्ड होता है और पेनफुल. डिस्टेंसिबिलिटी विजाइना की जो है वो भी नोट करेंगे इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ फिंगर्स इट कैन एडमिट विदाउट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट. इट कैन एडमिट 2 fingers easily. Sexual intercourse has probably occurred. Extent of violence to the private part will depend upon the age of the victim and her previous condition with reference to intercourse, whether virgin, sexually active, or child. Discuss below. Slaughter states the colposcopic examination within 72 hours of the assault is an important adjunct to traditional simple macroscopic assessment of genital trauma. यानी कि 72 hours में उसने कहा है कि कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी चाहिए. ये है वो कोल्पोस्कोप और इसके ज़रिए जो है वो वजाइना वगैरह को सर्विक्स इसको विजुअलाइज करके और एग्जामिन करना है. रेप ऑन वर्जिन.